한이고 제 영어 이름은 해나입니다. Your name is Han. My English name is Hannah. मेरा नाम जो है वो हैना है, ठीक है, और मैं कोरिया से हूँ. 이번에 여기 와서 여러분들 그냥 화면으로만 보다가 이번에 와서 직접 만나서 너무 기쁘고 행복했습니다. So it's the first time for me to see you guys face to face, and it's really happy for me. ये मैं पहली दफ़ा आप लोगों को देख रही हूँ फेस टू फेस और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ. 저는 6살 때부터 지금 있는 반석교회에 다녔지만 사실 이 복음의 가치를 알게 된 지는 몇 년 안 된 것 같습니다. I've been attending this church, Hansa Church, since I was 6 years old. It's recently that I realized this happening in God. मैं जब 6 साल की थी तब से मैं इस चर्च को जो ना वो अटेंड कर रही हूँ, लेकिन अभी कुछ अर्सा ही हुआ है कि मैंने सही तरीके से अपने आप को महसूस किया कि मुझे खुदा के साथ चलना चाहिए. 어릴 때부터 당연하게 듣고 자랐던 이 복음의 말씀이 저한테 진짜 생명이 되고 능력이 되는 그런 시간표가 있었습니다. So this gospel that was really rightful to begin the life. Sometime in my life. और ये जो अंजील है ये मेरी ज़िंदगी के लिए बड़ी अहम है, क्योंकि ये वो चीज़ है जो हमें अंदर से भी बदल देती है. 저는 그래서 사실 여러분이 지금 막 이게 엄청 믿어지고 은혜 받지 않아도 이 자리에 함께 있는 것만으로 너무 귀하다고 생각합니다. I think that just being with us right now is really precious. और आप लोगों के साथ यहाँ पर होना ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो कीमती है और बड़ा ही अहम है. 왜냐하면은 듣고 자란 복음의 말씀이 어느 날 분명히 하나님의 시간표에 역사로 일어나기 때문입니다. This is one of the gospel work in God's time schedule. और मुझे पता है कि इन जब हम खुदा के साथ चलना शुरू करते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है इन चीज़ों को समझने में, उनको करने में. 여러분이 생각하기에 한국은 엄청 좋은 나라라고 생각할 것 같습니다. So I think that Korea is a good country to live. और मुझे पता है कि लोगों को इस बात का पता है कि कोरिया एक अच्छा मुल्क है रहने के लिए. 그리고 실제 파키스탄보다 살기 좋은 나라인 것도 맞습니다. And this is in fact it's better to live in Korea than Pakistan. और ये एक हकीकत है कि पाकिस्तान में रहना और कोरिया में रहना बड़ा फ़र्क है, और कोरिया जो है ना वो बेहतर है. 하지만 한국은 여러분 또래의 사람들이 친구들이 3분의 1 정도는 정신과 약을 달고 삽니다. And 1/3 of the population that's in you guys in Korea, they take this the medicine. लेकिन यहाँ पे मैं बताना ये चाहती हूँ कि तकरीबन एक तीसरा ही जो हमारे मुल्क का हिस्सा है वो इस तरह का है जिस तरह से मैं बताना चाह रही हूँ, लेकिन ज़्यादातर लोग वहाँ पे जो है वो ज़हनी जो है वो बीमार ही है. 갈수록 기술은 발전하고 살기 좋아지지만 어느 날 찾아오는 영적인 문제는 막을 수가 없습니다. So the technologies is developing the spiritual problems that comes to you one day you're gonna वहाँ पर टेक्नोलॉजी तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन जो रूहानी मसला है ना वो नहीं सॉल्व हो रहा, वो वहीं का वहीं रह गया. 저에게도 어느 날 이게 믿어지는 시간표가 있었고 저는 그 20살 이후에 그런 저에게 시간표가 있었고 저에게는 그때 이 복음이 예수 그리스도가 정말 생명으로 시작했습니다. और 20 साल के बाद मैंने यीशु को कबूल किया और तब मुझे पता चला कि वाकई ही कुछ फ़र्क है पहली ज़िंदगी में और ये वाली ज़िंदगी में. 원래는 제 인생에 많은 여러 가지 꿈이 있었지만 그 복음을 정말 붙잡고 나서는 그런 꿈이 다 사라졌습니다. I have so many dreams in my life, but as I'm holding on to this gospel, those are all gone. मेरे बहुत सारे ख्वाब है, लेकिन ये वाला जो मैंने खुदा के कलाम को पकड़ लिया ना ये सबसे बड़ा था और वो खुदा ने पूरा कर दिया. 그래서 정말 이 복음을 전하는 일을 위해 그리고 또 교회를 위해 후대를 위해 평생을 살고 싶다고 하나님 앞에 결단하는 시간이 있었습니다. So I made a resolution for God that I will future this church is for the gospel. और मैंने खुदा के सामने ये अज़म रखा है कि खुदा मैं बड़े लंबे अरसे के लिए इस चर्च के साथ जो ना वो चलना चाहती हूँ. 그런 결단 속에서 하나님이 저를 또 이 파키스탄 현장에 불러주셨다고 생각합니다. Sure, through this resolution, God called me through this Pakistan. और मुझे पता है कि ये जो मैंने अज़म रखा था उसी वजह से खुदा ने मुझे यहाँ पर भेजा है और उसका भी मकसद है यहाँ भेजने का. 지금은 이 복음이 엄청 소중하다고 느껴지는 분들이 많지는 않은 것 같습니다. Not a lot of people think this gospel is so precious.
और मुझे पता है कि बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ को शायद ना समझते हो, लेकिन मुझे पता है कि अंजील जो है वो कितनी अहम है। 하지만 전 세계에 그리고 지금 여러분 옆에도 이 복음 하나를 골라서 모든 게 있지만 고통받는 영혼들이 많다는 것을 꼭 알았으면 좋겠습니다. And I want you guys to know that there are a lot of dying souls out there, people around you. और मुझे पता है ये बड़ा मुश्किल काम है पूरी दुनिया में ना इस तरह का बदलावा लाना, लेकिन ये ज़रूरी भी है। 파키스탄에도 교회가 꽤 많은 걸로 어제 들었습니다. और मैंने सुना है कि पाकिस्तान में बहुत सारे चर्च हैं, 한국에도 그리고 전 세계에도 교회가 정말 많습니다. In Korea too, there are a lot of churches and all over the world. और कोरिया में भी बहुत ज़्यादा चर्च है और पूरी दुनिया में ही ऐसा ही है। 하지만 예수가 그리스도 모든 문제 해결자라고 말해주는 교회는 사실 많지 않습니다. There are not a lot of churches that tell us that Jesus Christ is the solution to all our problems. लेकिन बहुत सारे चर्चेस होने के बावजूद भी कोई ये नहीं बताता कि यीशु मसीह है और वही तमाम मुश्किलात का हल है। 그래서 우리와 여러분의 만남이 또 리아카시와 여러분의 만남이 얼마나 소중하고 귀한 것인지 꼭 아셨으면 좋겠습니다. It's hard, and hopefully, this is so important. I want you guys to know. और ये जो मीटिंग है और ख़ासतौर पर लियाकत और मेरे साथ जो मीटिंग हुई ये बड़ी अहम थी और बहुत कुछ जो है हमने एक दूसरे से सीखा। 이 복음이 여러분에게 꼭 생명이 되고 그 능력이 됐으면 좋겠습니다. और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो अंजील है ये ज़िंदगी की बहुत बड़ी हकीकत है और ये सही ताकत है इंसान की। 그리고 이 복음 안에서 여러분의 환경에 갇히지 않고 정말 세계 복음을 꿈을 꿨으면 좋겠습니다. I want you guys to dream about this world evangelization, not trapped in the environment. और आप यकीन करें कि मैं सिर्फ और सिर्फ अंजील को जो है वो सबसे ज़्यादा अहमियत भी देती हूँ और मेरे लिए वही ज़्यादा है। मुझे ये इर्द गिर्द का जो माहौल है ये मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। अंजील मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ है। 성경에 보면은 예수님은 마지막까지 모든 민족 땅끝까지 가서 복음 전하라고 하셨습니다. So in the Bible, it says Jesus told us that go to all nations and let all the people saved. क्योंकि खुदा के कलाम में भी लिखा है वह के पास जाओ और सारी दुनिया को मेरे नाम के शागिर्द बनाओ और अंजील की मनादी करो। 여러분도 그런 세계 복음의 꿈을 꾸는 지금 이 시기가 됐으면 좋겠습니다. You guys dream about the world evangelization. और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपका भी यही ख्वाब है और हमारा भी यही ख्वाब है कि पूरी दुनिया में अंजील की मनादी होनी चाहिए। 우리는 당연히 할 수 없지만 이 복음의 말씀은 생명이고 살아있기 때문에 여러분 안에 말씀이 있다면 그 일은 반드시 되어질 것이라고 믿습니다. So we can't do it on our own, but this word is powerful. It's powerful. So if we have this in your heart, then I'm sure that God will work in your life one day. और ये हम अपने तौर पे नहीं कर सकते जब तक हम हमारे साथ खुदा नहीं होगा हम ये कभी भी नहीं कर सकते। इसलिए हमेशा उसी का साथ मांगना चाहिए। 그래서 매주 이곳에서 듣는 말씀을 정말 흘려듣지 않았으면 좋겠습니다. So I want you guys to really focus on the word, the worship every week that you guys are having. और मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि हर हफ्ते हर दिन जो है वो आपको इबादत में ठहरना चाहिए, आपको खुदा के साथ गुफ्तगू करनी चाहिए। 저는 매주 교회에서 예배를 드릴 때 하나님 앞에서 기도하는 게 하나님 오늘도 단 하나의 말씀이라도 저에게 들려지게 해달라고 진심으로 기도합니다. So whenever I have worship, I pray about that. God, let me hear at least one word of this worship. और आप जब दुआ कर रहे होते हैं इबादत में होते हैं तो कम से कम खुदा से कहा करें कि हम कोई एक ऐसा लफ्ज़ है जो मेरी ज़िंदगी को बदल दे। 그리고 그 말씀이 일주일 동안 제 삶에 성취되기를 그리고 그 말씀을 따라서 살기를 간절하게 기도합니다. I always pray so that I can live by His word. और मैं दुआ करती हूँ कि खुदावंद मैं हमेशा तेरे कलाम के लिए जीऊँ। 여러분도 그렇게 복음의 말씀을 따라서 하루하루를 살아가셨으면 좋겠습니다. और मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आप भी खुदा के कलाम को थाम लें, उसके पीछे चलना शुरू करें। ये दुनिया की जो चीज़ें हैं ये इधर ही रह जाएंगी, लेकिन खुदा का कलाम हमेशा आपके साथ रहेगा। 이번에 여러분들 만나서 너무너무 기뻤습니다. And also, I have to meet you guys. और मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों से मिल के भी। 한 사람 한 사람 다 너무 제 마음에 담고 가는 것 같습니다. Having each one of you in my heart. और आप लोग सारे के सारे मेरे दिल में हैं और हमेशा रहेंगे। 돌아가서도 진심으로 기도하다가 내년에 다시 오도록 하겠습니다. और मैं उम्मीद करती हूँ कि
मैं जब यहाँ से वापस जाऊंगी तो मैं फिर दोबारा जो ना आने की कोशिश करूंगी। 감사합니다. 이학과 여기 아니죠? 이학과 아니죠? 오늘 2시간 정도 되죠. 두 번째 누구세요? 여기 앞에 나와 있어요. 남학생도 저희도 남학생도 나와 있어요. 나와 있어요. इधर आ। 여기 앉으세요. 잠깐만 서연이 바꿔줘. 잠깐만 바꿔줘. 그럼 네가 한국말로 해야 돼. 아 쌤 저기 안 줘. मेरा नाम ट्रीजा है My name is Teresa. 제 이름은 트리샤입니다. और मैं पाकिस्तान से हूँ I'm from Pakistan. 저는 파키스탄 사람입니다. और मुझे 2 साल हो गए हैं मैं पास्टर इमाम की क्लास ले रही हूँ और I have been taking class for the last 2 years with Pastor Juan. 황신영 목사님과 2년 동안 함께 온라인으로 예배드렸습니다. और मैंने उनकी क्लास में सबसे ज़्यादा जो मुझे अच्छी बात लगती है और जो मेरे दिमाग में बैठ जाती है वो ये है कि जब इंसान खुदा के साथ है तो वो खुश है। जैसे आसमान में जो परिंदे हैं वो आसमान में खुश रहते हैं, जो दरख्त हैं वो ज़मीन में लगे रहें तो खुश रहते हैं। इसी तरह जैसे इंसान है वो जब खुदा के साथ होता है तभी वो खुश है। And one is the most important thing which I learned from Pastor Juan. 제가 황신영 목사님한테 들었던 가장 중요한 것은 And he always said when the human being connected with God, so they will be the happy. 하나님과 함께 있을 때 인간이 가장 행복하다는 것입니다. And after the separation, the human being is suffering. 그리고 하나님과 떨어졌을 때 인간의 고통이 시작되었다는 것입니다. And also one more thing I want to say, 하나 더 말씀드리고 싶은 건 as fish live in the water 물고기가 물에, and the tree planted in the 나무가 땅에, and the birds fly in the air. 새가 하늘에 나는 듯이 If they have a rule, 거기에는 창조 원리가 있습니다. so human being also have a rule. 역시 사람에게도 창조 원리가 있습니다. So this thing is very heart touching for me. 이것이 저에게 정말 와닿았습니다. So it means we want to live with God forever. 그게 바로 우리는 자연스럽게 하나님과 함께 살기를 원한다라는 것입니다. जब मैं छोटी थी तो मैं मतलब कि जब भी किसी की फादर से क्लास लेनी या पास्टर किसी से भी तो मुझे लगता था बस ऐसे ना मेरे ऊपर से चीज़ें गुजर के जाती हैं। When I was listening the lecture of the other priests or pastors, 다른 교회 목사님들의 메시지를 들었을 때 all things are crossing from my head. 그때 제가 기억에 남았던 것들은 Me to say I cannot understand what they are talking about. 뭐라고 말하는지도 잘 사실은 모르겠었습니다. लेकिन जब मैंने पास्टर वहाँ की क्लास लेना शुरू किया तो जो भी वो मतलब कि बोलते हैं ना वो मेरे दिल में बस जाता है और मुझे ना भी ना कुछ समझ आती हो लेकिन उनकी छोटी सी भी बात ना वो मेरे दिमाग में बस जाती है। But when I used to listen Pastor Juan's message, 제가 옛날에 이제 황 패스터 메시지를 들었을 때 황신영 목사님 and gradually his teaching comes to in my heart and mind. 점진적으로 천천히 저에게 이 말씀이 와닿았습니다. And I was also shocked. 그리고 저는 되게 놀랐는데요. What is happening when I listen to the others one? So I cannot understand. But when Pastor said, so I easily understand all the things. 내가 놀랐던 거는 다른 목사님들의 이야기 들었을 때는 내가 이해를 잘 못했는데 황신영 목사님께서 말씀하시는 걸 듣고 내가 이해할 수 있다는 것을 놀랐습니다. और मुझे ये लगता है कि पास्टर हम और उनकी टीम जो है ना वो हमारे लिए एक ब्लेसिंग बनकर आई है और जिस दिन के वो आए हैं ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है स्पेशली विद हैना एंड सुंदरपा According to my thought, 제 생각에 the Pastor Juan and his team, 그 패스터 황신영 목사님과 우리 팀들이 the blessing for us.
우리를 되게 축복해주고 있다는 걸 느꼈습니다. And when they came in Pakistan in this time, 이번에 파키스탄에 오셨을 때 from that day, 그때부터 I was very happy and excited. 나 너무 기뻤고 너무 지금 즐거웠습니다. And especially Hannah and the other name is 순다랑 박순현 장모님하고 얘기를 해서 더 기뻤습니다. so this is my 멀리가 있어. 야 여기 물 좀 갖다 줘. 아까 그냥 물 좀 갖다 줘. 두개 갖다 줘. 먹던 거 아니야? 목사님이 하나 들고 나오시면 스타트. 시간 많지 않아요. 안녕하세요. 저는 영어 이름은 에단이고 한국 이름은 진반석입니다. मेरा जो इंग्लिश नाम है वो एडन और मेरा कोरियन नाम है वो बन 제가 여기 오게 된 이유는 이 예수 그리스도 이름을 정말 믿고 구원 받음으로써 너무 감사해서 이 자리에 증인으로 나오고 싶다는 생각에 여기까지 오게 되었습니다. Because I want to stand as a witness of believing in this name Jesus Christ. मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ तो ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से है क्योंकि मैं यीशु पर ही यकीन रखता हूँ। 저는 모태신앙으로 태어나서 이 예수 그리스도 이름과 하나님이라는 그 말을 믿어야 된다는 말을 너무나 많이 듣고 자랐습니다. मैं एक क्रिश्चियन खानदान में पैदा हुआ और मैंने अपने माँ बाप से सुना कि जीसस के बारे में और हमेशा से मैं उनको सीखता आ रहा हूँ। 근데 저는 믿지 못했습니다. 왜냐하면 제가 원하는 가치는 다른 곳에 있었기 때문입니다. मैं इस काबिल हुआ हूँ कि मैं जो खुदा की बातें हैं उन पर मैं ज्ञान कर सकूँ और अपनी ज़िंदगी को उसके मुताबिक चला सकूँ। 사람이 행복하지 않은 게 주변에서 많이 말하는 것은 이제 돈이 있어야 행복하다고 하고 가정이 좀 화목해야 행복하다고 하고 그리고 재산이 많아야 그리고 또 여러 가지로 다른 가치에 대해서 너무나 많이 듣고 자랐기 때문에 그리고 보이는 것은 육체적인 거기 때문에 그것으로 행복하다고 생각을 하고 그것을 위해 살았습니다. मैंने लोगों से सुना था कि पैसा हो तो बहुत बड़ी बात है, पैसे के बगैर कुछ नहीं होता। तो मैं उन लोगों से उन चीज़ों से बहुत ज़्यादा जो है मुतासर था और मैं भी यही चाहता था कि मेरी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। 네, 그 육체적인 것을 위해 열심히 사는 도중에 어느 날 저에게 하나님이 찾아오셨습니다. Living my life, chasing after the physical things. One day, God came to me. और जब मैं दुनियावी चीज़ों के पीछे पड़ा हुआ था फिर एक दिन खुदा मेरी ज़िंदगी में आया। 저는 그 채워지지 않는 공허함과 흑암과 그리고 외로움을 채우기 위해서 열심히 저의 힘으로 많이 채워봤지만 그 뭔가 채워지지 않는 것이 있었습니다. और मेरी ज़िंदगी में तन्हाई और उदासी थी सिर्फ। मैं बड़ी कोशिश की इससे बाहर निकलूं लेकिन नहीं निकल सका। 종교도 사람도 육체적인 어떤 것에서도 그것에 대한 답을 주지 못했는데 교회만 그것에 대한 답을 정확하게 얘기해주고 있었습니다. और कोई भी जो दूसरी चीज़ है बाहर की चीज़ है उन्होंने मुझे किसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन सिर्फ चर्च ने मुझे इस बात का जवाब दिया। 원래 태초에 창세기 1장 2절에 보면 혼돈, 흑암, 공허가 있었고 하나님을 떠난 상태의 사람은 그 속에서 벗어날 수 없다는 사실입니다. So if you read Genesis chapter 1 verse 2, there's chaos, darkness, and then the people who turned away from God, they can get away from this. और जब हम पैदाइश
पहले बाप की दूसरी आयत का मुताला करते हैं तो वहाँ पे जिक्र मिलता है कि दुनिया में तारीकी थी, और ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में भी जब हम खुदा की तरफ आते हैं तो वो तारीकी दूर हो जाती है। 그래서 제가 많이 들었던 그 예수 그리스도가 저에겐 답이 되지 않는 사실을 상태인 것을 보고 그때부터 예배 시간에 기도에 집중하게 되었습니다. So I looked at myself and I realized that this Jesus Christ doesn't give up the answer in my life. So I try to focus on his prayer. और जब मैंने ज़िंदगी में देखा कि सिर्फ यीशु ही तमाम चीज़ों का जवाब है, तो फिर मैंने ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो दुआ पे जो है ना वो गौर करना शुरू कर दिया। मैं दुआ में ठहरना शुरू हो गया। 그때 알았습니다. 예수 그리스도가 저에게 지식으로는 많이 담겨 있지만 정말 내가 믿지는 못하고 있다는 사실을 그때 알았습니다. And I realized that this Jesus Christ is the knowledge to me, but then he doesn't become the reality to me. और मैंने ज़िंदगी में महसूस किया कि खुदा के बाद, यीशु के बाद कोई और चीज़ नहीं हो सकती, इसलिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा खुदा के साथ चलना है। 근데 이것을 믿지 못하는 것은 어떻게 보면 당연합니다. 왜냐하면 영적인 사실이기 때문에 우리는 그것을 보지도 못하고 믿지 못합니다. Not being able to believe in him is something obvious because we cannot see him, right? It's not visible things. और ये उसके बगैर मुमकिन नहीं है, क्योंकि हम जितना मर्जी दूर देखते रहे, हम उसके बगैर जो अच्छी वाली चीज़ें हैं उनको नहीं देख सकते। 하나님만이 그 일을 하실 수 있고 그래서 하나님의 은혜로 저는 구원받았다고 말을 합니다. 교회에서는 말을 합니다. So only God can do his work, and these churches are telling me that I can be saved by him. और सिर्फ खुदा के फजल से, और जो चर्च है वो बार बार हमें ये समझाता रहा कि उसके फजल के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। 그래서 그 하나님이 하셔야 된다는 사실을 알고 예배하고 기도하는 것 그 외에는 저에게 행복이 없다는 사실을, 하나님을 만날 수 없다는 사실을 알고 그것에 정말 매진하고 있습니다. So I try to focus on worshiping and praying to him because nothing can give me the answers. और मैंने दुआ में और इबादत करना शुरू की, दुआ करना शुरू की, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि इन चीज़ों के अलावा कोई और चीज़ मुझे जवाब नहीं दे सकती। 한국에는 정말 많은 교회가 있습니다. 정말 어마어마하게 많은 교회가 있는데 그 교회들에서도 정확한 답을 얘기해주지 않습니다. 뭐 착하게 살아야 된다고 하고 뭐 헌신하면서 살아야 되고 예수님처럼 살아야 된다는 그 사랑으로 살아야 된다고 하는데 그 안에서 그 사람들은 정말 해결되지 않는 문제를 겪고 있습니다. So there are so many churches in Korea, and these churches are telling us to be nice, to live well, but then those things cannot give us the answers. और बहुत सारे कोरिया में चर्च है जो सिर्फ यही बताते हैं कि अगर आप अच्छा करते हैं, अच्छे तरीके से लोगों के साथ बर्ताव करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो जो सही जवाब है वो नहीं कोई भी देता। 그래서 여기 있는 여러분들도 정말 많은 것이 인생에서 부딪힐 거라는 걸 알고 있습니다. 왜냐하면 사단은 그것을 정확하게 알고 여러분들을 복음이 예수 그리스도가 아닌 것처럼 계속해서 속일 겁니다. And I know that you guys are going to go through a lot of hardships, but then don't be deceived by Satan because Satan keeps trying to deceive you so that this Jesus Christ doesn't become the Jesus Christ in your life. और मुझे पता है कि यहाँ पे भी एरिना बहुत सारे लोग हैं जो मुख्तलिफ चर्चेज़ में जाते हैं, और मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप ना जाएं चर्च, लेकिन इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि कहीं पे शैतान तो आपको धोखा नहीं दे रहा कि आप जा तो रहे हैं लेकिन आपको यीशु के बारे में पता ही नहीं चल रहा, तो इसका मतलब है कि ये धोखा हो रहा है। 그런데 구원받고 그 구원의 가치를 아는 사람은 계속해서 영적 싸움을 할 수밖에 없습니다. 그래서 매일 그 영적 싸움이 시작되었으면 좋겠습니다. People who know the value of the gospel, they know there's this spiritual battle going on. So I want you guys to challenge on this spiritual battle every day. और जो लोग रूहानी ताकत को समझते हैं, रूहानी जंग को समझते हैं, उन्हें इस बात का पता होना चाहिए कि ये बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन जब खुदा आपके साथ है तो फिर आपको डरना नहीं है। 저는 매일 아침 생각을 합니다. 내가 구원받기 전에 어떤 상태였는지, 그리고 구원을 받고 어떻게 변했는지, 구원받은 이후에 내가 무엇을 위해 살아가는지 매일같이 생각을 합니다. So every morning I think about how I was before I got saved and how I changed after I received the salvation and how I should live. और मैं हर रोज़ सुबह को इस बात पे ध्यान ज्ञान करता हूँ कि कैसे मैं बचाया जा सकता हूँ या मैं कैसे बच गया हूँ और खुदा मेरे से कैसे काम कर सकता है। यानी हर रोज़ मैं इस बात का इतराफ़ करता हूँ कि यीशु जो है वो मेरे लिए क्या है। 그리고 매일같이 기도합니다. 예수 그리스도의 가치가 내게 매일 새롭게 되길. 사단은 이 가치가 매일같이 나한테
가치 없는 것처럼 다른 것이 더 가치 있는 것처럼 계속해서 속이기 때문에 계속해서 하나님 앞에 기도합니다. Every day I pray to Jesus that please renew this value of the gospel every day because Satan he keeps deceiving me that deceiving me to lose the importance of this gospel. और रोज़ाना जो है वो खुदा यीशु मसीह मुझे इस बात के लिए बताते हैं कि तूने अपने ईमान पे कायम रहना है क्योंकि शैतान जो है वो मुझे रोज़ ही जो है वो वर्गलाता है और वो मुझे रोज़ धोखा देने की कोशिश करता है. 저도 외형적으로는 다르게 보일지 몰라도 여러분들과 똑같이 사람입니다. 그렇기 때문에 계속해서 사람이 보이고 나에게 필요한 건 다른 것처럼 보일 수밖에 없습니다. So I might have different appearance, but then I'm just like you guys. So I always see other people and other things that I can see with my eyes. मैं खदोखाल से मैं आप लोगों से मुख्तलिफ लग सकता हूँ लेकिन मैं हूँ आपकी तरह ही इंसान ही हूँ और हर चीज़ जो है जिस तरह से आप लोगों के साथ है वैसे ही मेरे साथ भी है. 그래서 제가 여러분들을 위해 기도하는 건 하나님 앞에 기도하는 건 정말 여러분들이 문제와 상황이 생겼을 때 그것을 나에게서 문제를 찾지 말고 정말 하나님 앞에 질문하고 기도하는 시간이 있었으면 좋겠습니다. Whenever you guys face any limitation or hardship or obstacle, don't blame yourself, but then ask God why He's giving you this problem. और जब कभी आप ज़िंदगी में कोई मुश्किलात या किसी भी तरह का कोई ख़तरा महसूस करते हैं तो आप लोगों ने परेशानी होना बल्कि आप खुदा से पूछें कि खुदावंद इस मसले का हल क्या है. 굉장히 괴로운 시간일 걸 압니다. 저도 그랬으니까요. 내가 문제가 있고 내가 힘든 건 돈이 없어서 아니면 가정이 뭔가 불안해서 아니면 질병 때문에 오는 불행이라고 생각을 합니다. I know this is going to be really painful because I was just like that too. I thought that I'm not happy because I don't have a lot of money. My family's poor, and I have this disease. और कई दफ़ा ऐसा होता है कि मैं भी सोचता हूँ इस बारे में कि मैं ज़्यादा अमीर नहीं हूँ, मेरे पास जो है ना वो ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, तो क्या मुझे परेशान होना चाहिए? बल्कि नहीं, बल्कि मुझे हमेशा जो है ना इस बात का यकीन रखना चाहिए कि ये चीज़ें कोई मायने नहीं रखती. 하지만 하나님을 진짜 믿으신다면 걱정할 필요가 없습니다. 천지를 창조하시고 나와 만물을 창조하시고 지금도 이 현장에 역사하시는 하나님이 나와 함께 하시고 내 미래에도 함께 계실 거기 때문이죠. But if you truly believe in God, you don't have to worry about anything because He's going to be with us until the end. और जब आप खुदा पर यकीन रखना शुरू कर देते हैं तो फिर आप दुनिया के आखिर तक उसकी गवाही देने वाले बन जाते हैं. 모든 것이 하나님의 절대 계획임을 믿는 여러분들이 되었으면 좋겠습니다. I want you guys to be the one who believe that God has a plan for you, a perfect plan for you. और मैं चाहता हूँ कि आप वो वाहिद लोग हों जो खुदा के साथ चलने वाले हैं ताकि वो अपना काम जो है वो आपके ज़रिए पूरा कर सके. 네, 여러분들 위해 항상 기도하겠습니다. 감사합니다. I always pray for you guys. Thank you. खुश रखें. मेरा नाम फ्लावर है My name is Flower. 저는 플라워입니다. और मैं पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ. I belong to Pakistan. 전 파키스탄 사람입니다. मैं 8वीं जमात से सलियाकत से पढ़ रहा हूँ. I'm studying from class 8th to grade 8. 그 리아카의 학생이고 8학년입니다. और मैं मिनिस्ट्री में भी तब से काम कर रहा हूँ जब से सर कर रहे हैं. और I have been working with sir in ministry work when he started ministry work in Pakistan. With Pastor Hwang. 리아카시 이제 그 사역 시작할 때부터 계속 도와서 함께 했습니다. और पहले मैं अपने चर्च जाता था और वहाँ पर पास्टर जो कलाम सुनाते थे तो मेरे दिमाग के ऊपर से चले जाता था, मुझे कुछ समझ नहीं आता था. And when I attending the churches and from different pastors sharing the gospel, so I could not understand correctly. 다른 교회에 갔을 때 다른 목사님 만났을 때는 정확하게 이해할 수 없었습니다. लेकिन जब से मैंने सर के साथ काम करना शुरू किया और पास्टर ख्वाम के साथ काम करना शुरू किया तो मुझे कलाम के बारे में वो बातें समझ आने लगी जो पहले नहीं आती थी. When I was studying to Mr. Liaquat and Pastor Hwang in a ministry, so that time I realized that
this is the different that teaching. 그 황신영 목사님과 리아카스랑 함께 이렇게 사역에 동참하고 이렇게 메시지를 들으면서 이 메시지는 다르구나라고 생각했습니다. And from that time, I can understand easily, and those things which I cannot understand earlier. 이전에는 이해 못했던 것들이 이제는 이해되기 시작했습니다. और मैंने पास्टर हुमांग से और सर लियाकत से बहुत सी ऐसी कलाम की बातें सीखी जो पहले मुझे नहीं आती थी. I learned so many things from Pastor Hwang's message, which I cannot listen before attending the churches, different churches. 다른 교회에 있을 때는 듣지 못했던 메시지였습니다. और मैंने एक और बात सीखी है कि जब से मैंने पास्टर हुआंग और सर से क्लासें लेने शुरू की हैं तो मुझे ये पता चला है कि आपकी ज़िंदगी में जब तक यीशु मसीह नहीं आएंगे या आप खुद उन्हें ना लेके आएंगे तो आपकी ज़िंदगी अधूरी है. I learned from Pastor Hwang's message one thing is very important, that if you in your life, if Jesus is not in your life, so you cannot succeed in your life too. 하나님이 내 삶에 함께 하시지 않는다면 내 삶도 성공할 수 없다라는 것을 배웠습니다. और जब वो पास्टर हुआंग की टीम पिछले दफ़ा मेरे घर आई थी तो मेरे घर में बहुत सी मुश्किलातें थी, तकलीफ़ें थी, बीमारी थी, लेकिन जब पास्टर हुआंग वहाँ पर लेक्चर करके गए, दुआ करके गए, बहुत सी तब्दीलियाँ मुझे नज़र आईं. In last time when Pastor Hwang and Jungsu and Kwang Yoil came at my home and they worship over there, and before their arrival, so many problems at my home, but as they worship over there, many changes came at my home through the worship. 작년에 그 중수 오빠랑 광열 오빠랑 왔을 때 사실 저희 집에는 많은 문제가 있었습니다. 근데 그때 저희 집에 와서 예배를 해주셨고 그 이후에 저희 집에도 그 메시지를 통해서 많은 변화가 있었다고 생각합니다. और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि पास्टर हुआंग की टीम इस साल भी मेरे घर आई और तब से जब ये दुआ करके आए हैं तब से भी थोड़ी परेशानियाँ थी, लेकिन मेरे घर वालों ने मुझे बताया है कि उस दिन से ऐसे लगता है कि हमारे घर में खुशहाली है. When in this time Pastor Hwang and his team came at my home on Saturday, so after the worship my parents on daily basis they are saying to me many difficulties at my home before their arrival, but after the worship many things are changing at our home and we are prosper in Jesus Christ. 그래서 이번에도 이제 토요일에 우리 팀들이 우리 집에 방문해서 예배해 주셨는데 이때도 정말 많은 문제들이 있었는데 우리 팀이 와서 메시지를 해주시고 이후에 정말 우리 집에 많은 문제들이 변화되고 또 더 번영한다는 걸 보았습니다. और मेरे ख्याल से पास्टर हुआंग की टीम यहाँ पाकिस्तान आई, मेरे घर में आई, वहाँ पर दुआ की और मैं समझता हूँ कि मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है. And the Pastor Hwang and his team as they came at my home, so this is the great blessing for me and as well as for my family. 이번에 우리 팀이 오셔서 저희 집에 방문해 주신 거는 정말 큰 하나님의 은혜고 또 우리 집의 영광이었습니다. मेरे ख्याल से पास्टर हुआंग की टीम ये बहुत एक अच्छा काम कर रही है कि इतनी दूर से खुदा का कलाम लोगों तक पहुंचा रहे हैं. मेरे लफ्ज़ों में ये कहना है कि ये एक सही मुनादी है. According to my thought, this is the proper way to evangelization all over the world. As this team came in Pakistan, so in this way, I have also desire that one day we will do the word evangelizations all over the world together.
이번에 이렇게 팀이 와서 이곳에서 선교해 주는 게 제 생각에는 정말 적절하고 완벽한 선교였다고 생각합니다. 그리고 이번 팀을 통해서 저도 앞으로 이들과 함께 세계의 복음을 하고 싶다라는 꿈을 꾸게 됐습니다. और मैं समझता हूँ कि मैं जब से पास्टर हुआंग और सर से क्लासें ले रहा हूँ मेरी ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी तब्दीलियाँ आई हैं जो मैं बयान नहीं कर सकता. And I cannot describe in words that through the grace of God and the help of the Pastor Hwang and Evangelist Liaquat, he always inspiring for me and my life got changed, totally changed before the that earlier what I was. 이제 제가 지금까지 했던 것들이 이제 많이 변화가 됐는데 그거는 이제 황시영 목사님의 도움과 또 리아캇의 도움으로 해서 영적으로 많이 영감을 주셨고 그래서 제 삶이 그 전의 삶과는 완전히 다른 삶이 되었습니다. 그래서 이거는 이 하나님의 은혜는 말로 표현할 수 한 단어로 표현하기는 어려울 것 같습니다. और मैं समझता हूँ कि पास्टर हुआंग की एक मेंबर जो है वो बहुत अच्छा खुदा का कलाम जो है वो दूसरों को सिखाते हैं. फर्स्ट ऑल ब्रदर जे उन्होंने सुबह बहुत अच्छा जो है खुदा का कलाम हमें समझाया और हमें बहुत अच्छा लगा और ब्लेसिंग आई. And I really appreciate the Pastor Hwang's team who came on mission trip, and each of one of you people, especially JJ, in the morning he taught very well, and I learned so many things from JJ. 그래서 여기 팀 멤버들에게 너무 은혜를 많이 받았고 특히 정민우 랩런트에게 많은 영감을 받았습니다. और मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ कि पास्टर हुआंग की टीम इतनी दूर से हमारे लिए इधर आए हमसे मिलने और मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ. I'm really grateful for Pastor Hwang and his team that he came from so far from here to share the word of God, which is the blessing for us. 네, 그래서 멀리서 이렇게 와주셔서 저는 너무너무 감사드렸고 이거 정말 하나님의 은혜라고 생각합니다. 네, 5분씩 해주시고 여러분 5분씩 좀 해주시고. 난 키가 작아가지고 없어요. 오케이. 잠깐만요. 그다음에 펄린. 리아카, tomorrow we will meeting. Yes, in the morning. In the morning. Yeah. Okay. With the disciples. You. Pauline next to you. And you. And this. You. Okay? 술탄. 소리. 안녕하세요. 제 이름은 이경숙입니다. मेरा नाम 경숙 리. 이 선교를 정말 하나님이 준비하셨고 하나님이 모든 것을 이루어 나가신다고 믿습니다. और मैं हमेशा इस बात को कहती हूँ कि खुदा का जो मिशन है वो पूरी दुनिया के लिए है. 그리고 우리 리아캇 패밀리에게 너무나 감사합니다. और मैं लियाकत की फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ. 그래서 우리 여러분들을 만나서 너무나 행복하게 저희가 선교를 한 것 같습니다. और मैं समझती हूँ कि हमने अपना जो मिशन है उसको बड़ा ही खुशी के साथ जो ना वो पूरा किया है आप लोगों की मदद के साथ और लियाकत की फैमिली के साथ. 저희가 이 파키스탄 선교를 놓고 오기 전에 많이 기도했습니다. और यहाँ पर आने से पहले मैंने बहुत ज़्यादा दुआ की.
지금도 이 교회 우리 교회에서 많이 기도하고 있습니다. A lot of people, our church members, they're still praying for us at our church. और हमारे बहुत सारे चर्च के जो लोग हैं वो अभी भी जो है वो हमारे लिए दुआ कर रहे हैं. 기도는 시공간을 초월해서 다 이루어지십니다. Time and space, and God's going to answer your prayer. और याद रखिएगा जब आप लगातार दुआ करते रहते हैं तो खुदा एक दिन ज़रूर जवाब देता है. 우리 파키스탄에 정말 많은 그리스도의 제자가 세워졌으면 참 좋겠습니다. I really hope that a lot of the disciples of Christ who raised in Pakistan. और मैं दुआ भी करती हूँ और मुझे खुदा ऐसा दिखाता है कि पाकिस्तान में बहुत सारे खुदा के शागिर्द मौजूद हैं. 그래서 여기서 세계복음화 하는 제자들이 많이 일어났으면 좋겠습니다. A lot of disciples is going to carry out this world right. और खुदा अपने काम को बढ़ाने के लिए उसको पूरा करने के लिए बहुत सारे शागिर्द जो है वो मुहैया करता है. 제가 파키스탄에 오고 싶어서 하나님한테 기도했는데 저희 아들이 여기를 가라고 돈도 대주고 기도도 해줬습니다. So I prayed to God that I wanted to come to Pakistan for the mission trip, and my son, he helped me come here financially, and also prayed for me too. और जब मैंने कहा कि मैंने पाकिस्तान मिशन ट्रिप पे जाना है तो मेरे बेटे ने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की. उसने पैसे के ज़रिए मेरी हेल्प की ताकि मैं यहाँ पर मिशन ट्रिप के लिए आ सकूँ. 여러분들도 앞으로 다른 나라 가는 선교를 기도하시기 바랍니다. I want you guys to dream about it, and also pray about, going overseas for the mission trip. और मैं बहुत ज़्यादा दुआ किया करती थी कि खुदा मुझे जो है वो मिशन ट्रिप पे जो है वो भेजे ताकि मैं भी एज ओवरसीज जो है वो वहाँ पे जाके तो खुदा का काम करूँ. 여기서 보니까 여러분들이 앞으로 선교하고 하나님의 은혜를 많이 받은 것 같아서 너무나 감사했습니다. I really give thanks to God because I can see you guys have received a lot of grace. और मैं आप लोगों की दुआ करती हूँ क्योंकि मैं महसूस करती हूँ कि खुदा का फजल आप लोगों के साथ है. 오늘 우리가 한국으로 가지만 가서도 여러분을 놓고 기도 많이 할 것입니다. We are returning back to Korea today, but we're going to pray for you guys. जब मैं यहाँ से जाती हूँ कोरिया तो मैं आप लोगों के लिए दुआ जारी रखूँगी और दुआ करती रहूँगी. 여러분들이 많이 공부하고 말씀 많이 리아카트에서 듣고 해서 나중에 한국에도 왔으면 좋겠습니다. Study hard and listen to the word of God from the a lot of times. And I hope you guys someday come to Korea. और मैं आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि आप एक तो ये कि स्टडी हार्ड करें और दूसरा ये है कि आप लियाकत से जो है वो ये खुदा का कलाम सुनते रहें. और मेरा ईमान है कि एक दिन आप लोग ज़रूर कोरिया आएंगे. Thank you. 감사합니다. खुदा के लिए कुछ बता सकते हैं. अब नाम तो सबको पता है मेरा. नहीं, आप सबको करें. ओके, आप सब जानते हैं कि मेरा नाम पॉलिन है. Do you know all my name is Pauline? 제 이름 폴린인 거 다 아시죠? I'm wife of लियाकत. मैं लियाकत की I'm wife of Mr. लियाकत. 저 리아카 와이프입니다. ओके ओके. मैं अपने आप को बहुत अच्छा मसीही समझती हूँ कि मैं क्रिश्चियन हूँ और मैं जीसस को फॉलो करती हूँ. I really you can say that I really blessful women that I born in the Christian's home and I believe in Jesus Christ. 저는 사실 크리스찬 집안에 태어나서 크리스찬 집안의 여자로서 굉장히 많은 축복을 받았습니다. और मेरे जो फोर फादर्स हैं, बाबा अजदाद जो मेरे हैं वो क्रिश्चियंस थे और उन्होंने हमें क्रिश्चियनिटी के बारे में बहुत कुछ बताया. My ancestors were also Christians and they taught about Lord of Jesus Christ. 제 조상들도 다 크리스찬이었고 그분들이 항상 저에게 그리스도에 대해서 많이 말씀해 주셨습니다. और मैं समझती हूँ कि मैं यीशु को मैं मानती हूँ और यीशु अपना काम मेरे से करवा रहा है कि मैं बच्चों को तालीम दे रही हूँ और यही मेरे लिए काफ़ी है.
और मतलब मैं समझती थी कि यीशु ने मुझे जो मेरा काम है वो मुझे दे दिया बच्चों को पढ़ाने का. According to my thought, God has given to one work that I'm teaching to the students. So this is the I think so. This is the great work for me that God has given already. 하나님이 저에게 주신 어떤 사명, 어떤 일은 아이들을 후대를 가르치는 것입니다. इन बच्चों को जो मेरे पास आते हैं मैं ऐसे ही ट्रीट करती हूँ, ऐसे ही इनकी फॉर्मेशन कर रही हूँ जैसे मैं कैरल और हैरिसन की करती हूँ. And I care all the children as I cared Harrison and Carol. 저는 다른 이런 아이들을 가르치는 걸 제 자식인 해리슨과 캐롤을 가르치듯 합니다. मैं इनको दुनियावी तालीम देती हूँ, लेकिन मुझे इतना नहीं पता था कि इनको जो जीसस की चीज़ें हैं, जीसस का कलाम है वो भी सुनाना है. Earlier I was not understand that I was teaching only the physical education. 이전에는 저는 깨닫지 못해서 아이들에게 육신적인 것을 많이 가르쳐 주었습니다. But after realization, 하지만 복음을 깨닫고 난 후에 I thought that about the Jesus, this is the main teaching. 이제는 제가 가르치는 교육의 중심은 예수 그리스도가 되었습니다. और मैं कन्फेस करना चाहती हूँ आप सबके सामने कि लियाकत ने जब पास्टर हवांग की क्लास लेना शुरू की तो मैंने इनको कहा कि हमें जीसस ने एक अलग काम दिया है कि टीचिंग है हमारे पास, हम अपना हिस्सा दे रहे हैं, बेस्ट दे रहे हैं, तो आप अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं. अर्लियर जब पास्टर हवांग के साथ स्टार्टिंग में क्लास स्टार्ट हुई थी. I'm truly Confess. I want to confess one thing. Earlier when Liaquat was starting taking the class with Pastor Hwang, I told to Liaquat, God has given to the that work for teaching. Why are you wasting the time with Pastor? 제가 솔직하게 오늘 고백할 게 있습니다. 처음에 리아캇과 황시영 목사님이 이제 메시지를 이렇게 주고받을 때 리아캇한테 이렇게 말했습니다. 하나님이 당신에게 아이들을 교육할 수 있는 그런 달란트 주셨는데 왜 메시지 듣고 이런 황시영 목사님의 메시지 듣는데 시간을 낭비하냐라고 물어봤습니다. और मैं इन्होंने एक दो अपनी ट्यूशन स्किप की जिसकी वजह से हमें थोड़ी फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स आई. तो मैंने फिर इनको कहा, मैंने कहा आप इतनी दूर से ऑनलाइन बैठ के मतलब जो आप ट्यूशन पढ़ाने को टाइम दे रहे थे आप इधर बैठ जाते हो, मतलब बच्चों की बहुत सारी ज़रूरियात को हमने पीछे किया. And Liaquat was doing hard for the meet the expenses of their children's education, and he skipped some that extra coaching classes. And I was angry with Liaquat. Liaquat, why you quit the tuitions? Because we need something, and you are spoiling the time with the pastor. 그래서 제가 리아캇한테 말했습니다. 리아캇, 너가 그 메시지를 듣지 않으면 넌 더 많은 아이들을 가르칠 수 있고 그럼 그 아이들에게 수업료를 받을 수 있는데 왜 너는 너의 시간을 그렇게 다른 곳에 허비하는지 이렇게 리아캇한테 화를 냈습니다. लियाकत ने मुझे बताया कि हमने बहुत मतलब इतने सालों से हम क्रिश्चियन हैं तो हमें बहुत सारे प्रीस्ट और बहुत सारे पास्टर्स ने हमें बहुत सारी एजुकेशन दी है. इवन दो कि लियाकत के पास खुद इतना ज़्यादा नॉलेज था, लेकिन वो कहते हैं कि वो एक यीशु मसीह के बारे में सच्ची बात बता रहे हैं, ट्रू जो है वो है हमें तालीम दे रहे हैं. And one day Liaquat counseling to me. 어느 날 리아캇이 저한테 이제 이야기했습니다. And he told me we have lot of knowledge about the Bible and we are born as a Christian, but when I listen the word of God from Pastor Hwang, so his teaching is totally different and pure according to the word of God. 어느 날 리아캇에게 제가 말했습니다. 우리가 크리스찬으로 우리가 자랐고 그 집안에서 태어났고 우리는 지금까지 성경에 대해서 많이 배워왔는데 황시영 목사님께서 말씀하시는 그 메시지는 어떤 순수한 복음 메시지였습니다. और डे बाय डे मैंने देखा कि लियाकत वाकई ही जो बातें मुझे बता रहे हैं, जो पास्टर हवांग बताते हैं बातें इनको, वो मुझे आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें ना अट्रैक्ट करने लग गई, मुझे अच्छी लगने लग गई कि वाकई कुछ है जो मतलब वो कुछ डिफरेंट है वो जो चीज़ें बता रहे हैं. और वो बहुत ही सिंपल वे से
हमारी मतलब जो दुनियावी चीज़ें हैं उससे रिलेट करके हमें छोटी छोटी बहुत लंबे लंबे लेक्चर्स नहीं, उनकी मुझे एक तो स्टाइल बहुत पसंद आया कि वो प्रेयर बहुत ज़्यादा बहुत लॉन्ग प्रेयर नहीं करते थे और ना ही लंबे लंबे लेक्चर देते थे। वो अपनी बात जो है वो बहुत टू द पॉइंट बताते थे। And gradually, when Liaquat sharing the word of God, which he learned from Pastor Wang, and gradually my life attracts, mean to say, feel attraction towards the lectures, and I felt that this is the unique teaching which is changing my life, and my thoughts totally change about Jesus. 이제 황시영 목사님과 계속 메시지를 들으면서 점진적으로 천천히 제 생각이 바뀌었습니다. 황시영 목사님의 메시지는 정말 순수한 복음이었고 이 복음이 나의 삶을 그리고 나를 바꿀 수 있다는 걸 깨달았습니다. And one more thing I want to tell about the messages of Pastor Wang. Pastor Wang's message is very short and to the point. He described what he want to say to the people for their progress and for their success. और जब लास्ट ईयर पास्टर सॉरी 그래서 황시영 목사님의 메시지는 조금 달랐는데 황시영 목사님의 메시지는 짧았고 그리고 정확하게 사람들에게 무엇이 필요한지 그들의 문제는 무엇인지를 이야기해 줬습니다. And very first time when Pastor Wang prayed, so all the people they are that setting their hands or eyes, and Pastor Wang's prayer finished. 그러니까 이제 파키스탄 사람들이 원래 하듯이 목사님께서 이제 기도 시작한다고 하니까 이제 기도를 딱 준비하고 있었는데 이미 끝났습니다, 기도가. जब लास्ट ईयर पास्टर वांग हमारे घर आए मुझे मतलब बहुत अच्छा फील हुआ, लेकिन मेरे लिए ऐसा ही था कि फॉरेनर्स और वो भी कोरियंस हमारे घर में स्टे कर रहे हैं। मैंने इनकी बहुत खिदमत की, मतलब जो मैं कर सकती थी, लेकिन इस दफ़ा मतलब इसके बाद मैंने फील किया कि वाकई ही खुदा मेरे और लियाकत से कुछ और काम भी लेना चाहता है और हमारे घर को खुदा ने ब्लेस किया कि इस काम के लिए यूज़ किया गया। In last time when Pastor Hwang and his team, mean to say Jimsu and Kwang Yol came at my home, so that was a very exciting moment for us. And after their coming back, I was a whole year. I was thought that definitely God wants to take something from us. So that's why He sent more people in this time. 작년에 중수랑 광렬 오빠랑 목사님이 오셨을 때 사실 저는 굉장히 신이 났었습니다. 그리고 1년 동안 다시 오실 이 1년 동안 생각하면서 하나님이 이번에 더 많은 사람들을 보내셨는데 하나님 분명 우리에게 주실 무언가가 있기 때문이라고 생각했습니다. और पास्टर वांग ने सैटरडे को सैटरडे ठीक है। पास्टर वांग ने सैटरडे को एक मैसेज दिया था कि हमारे पास जब कोई अच्छी चीज़ होती है, लाइक डायमंड की रिंग है या गोल्ड है या आपके अंदर अच्छी एबिलिटी या खूबसूरती है, तो आप लोगों को वो दिखाते हैं। तो आपके पास सबसे यूनिक चीज़ है जीसस, वो क्यों नहीं आप लोगों को शो करते कि हमारे पास जीसस है? वो मतलब इन सब चीज़ों से भी खूबसूरत है। As we sang a song one day, so in Pastor Wang message on that Saturday, he was sharing. We have let's suppose we have a diamond ring and we show to the people, but you have a unique thing in a sense of Jesus Christ. Why you don't show to the people? We have a very precious thing. 목사님께서 지난주 토요일에 오셔서 말씀해 주셨습니다. 그때 우리 예수는 그리스도 찬양을 부르고 나서 목사님께서 메시지를 해주셨는데, 만약에 당신들에게 다이아몬드 반지가 있다면 그 반지를 자랑하고 싶지 않냐, 그와 같이 우리에게는 이 유일한 복음을 가지고 있는데 이 복음을 왜 자랑하지 않냐라고 말씀하셨습니다. मैं अपने आप को बहुत लकी समझती थी। इससे पहले मैं अपने आप को बहुत लकी समझती थी कि खुदा ने मुझे क्रिश्चियन ख़ानदान में पैदा किया, मेरे पास पेरेंट्स हैं, मैं एजुकेटेड हूँ, मेरे पास दुनिया का सबसे बेस्ट हस्बैंड
earlier I was thinking that I am a very lucky woman that he born as a Christian, and also God gave me a very that best husband in the world. 네, 그래서 저는 정말 행운이 좋다고 생각을 했습니다. 하나님께서 그래서 하나님께서 저에게 크리스천 집안에서 태어나게 해주신 것도 감사한데 세계에서 최고의 남편인 리아카스 만나게 해주셔서 너무 감사했습니다. लेकिन अब मैंने फील किया है कि जब पास्टर हवांग के मैसेज और ये जो सारी टीम आई है ये हमारे लिए इतनी दूर से आए हैं, तो मैंने फील किया है कि हम लोग यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे क्रिश्चियन बच्चे आते हैं, तो जिस तरह ये इतनी दूर से आगे आपको यीशु के बारे में बता सकते हैं, तो आप तो रोज़ मेरे पास आते हो इन द मॉर्निंग, तो मैं क्यों नहीं आप लोगों को यीशु के बारे में चीज़ें, क्योंकि मेरे पास भी नॉलेज है तो मैं भी बता सकती हूँ। और मुझे पास्टर हवांग के जितने भी मैसेजेस हैं उन्होंने मुझे मतलब मेरे हार्ट को टच किया ये। And I really thankful to Pastor Hwang, especially his messages in this time touched my soul and heart. And I thought that if these people came from Korea to share the word of God, why I cannot do that? 특히나 이번 선교 때는 그 황신영 목사님의 메시지가 제 마음에 더 와닿았습니다. 그리고 이 선교팀을 보면서 이분들도 이렇게 파키스탄을 위해서 선교로 와주시는데 나도 당연히 이 선교를 해야 되지 않냐라는 생각이 들었습니다. और आप सब ने मेरे लिए प्रेयर करनी है, अपनी दुआओं में याद रखना है कि मैं भी जिस तरह आप खुदा का कलाम दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा रहे हैं, इसी तरह हम लोग भी ये पाकिस्तानी बच्चे और मैं और लियाकत भी लोगों में यीशु के कलाम को फैला सकें। थैंक यू। And I have humble request to all you people that you pray for me and my family, that as you are sharing the word of God, go to the different countries, that one day our team and we also share the word of God with you people in different countries or all over the world. 저는 이제 겸손히 기도를 요청합니다. 저와 또 우리 가족 그리고 우리가 다 각자 다른 나라에서 이 복음을 전하다가 우리가 함께 이 복음을 전하는 그 날을 두고 함께 기도해 주셨으면 좋겠습니다. 감사합니다. 멋있다. 안녕하세요. 저는 한국 유경민이라고 합니다. मेरा नाम जोंगमिन यू है। 경민. Korean Harrison, you can say that. 이렇게 포럼 하려니까 너무 떨리는데 मैं थोड़ा सा शर्म महसूस कर रहा हूँ, थोड़ी फीलिंग शायद है कि आप लोगों के साथ मैं कैसे जो है वो फॉर्म जो है वो शेयर करूँ। 또한 하나님께 영광이기 때문에 포럼을 한번 해보도록 하겠습니다. This is also the glory of God, so I'm not trying to do my best. और ये सारा जलाल जो है खुदा को मिलना चाहिए, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपके साथ जो बातें करूँ वो उसके मुताबिक हूँ। 제가 파키스탄에 오게 된 이유는 일단은 황시영 목사님께서 그냥 따라오라고 해서 오게 되었는데요. So the reason why I come to Pakistan is because Pastor Hwang told me to follow them. मेरा यहाँ पर आने का सिर्फ एक ही मकसद था, क्योंकि मुझे पास्टर वांग ने कहा कि तूने जाना है, तो मैं तैयार हो गया। 저는 그때 그냥 아무 생각 없이 네 알겠습니다 따라가겠습니다라고 말했습니다. Without any thoughts, I just said yes, I will follow you. बगैर कुछ सोचे समझे मैं बस उनको हाँ कर दी कि मैंने जाना है। 그때는 일단은 파키스탄 현장에 대해서는 아무것도 몰랐고, 그리고 그냥 목사님이 부르시니까 가는 거라고 생각했습니다. I didn't know anything about Pakistan. Then I just thought that because Pastor Hwang is asking me to follow him, so I just said yes. मैं पाकिस्तान के बारे में कुछ जानता नहीं था, लेकिन क्योंकि मुझे पास्टर ने कहा था कि तुम्हें जाना है, तो मैं बस तैयार हो गया। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं चला जाता हूँ।
근데 이제 이 선교를 준비하면서 진짜 이 파키스탄의 현장을 조금 보고 같이 이제 찬양도 하고 예배도 드리면서 진짜 이 현장에 복음이라는 게 진짜 필요하겠구나라는 것을 조금 생각하게 됐습니다. So after coming here, having worship with you guys, praising together, I felt that you guys really need this gospel in your field in Pakistan. और जब मैंने यहाँ पर आया और मैंने आप लोगों के साथ दुआ की और इबादत में मैं बैठा तो मैंने महसूस किया कि वाकई आप लोगों को ज़रूरत है खुदा के कलाम की। 진짜 이 현장에 오기가 좀 쉽지 않았던 게 저는 일단 회사를 다니고 있었고 연차를 내기에는 조금 눈치가 보여가지고 조금 많이 힘들었습니다. So it wasn't easy for me to come here because I have a job, and it was hard for me to, use this vacation days. और मेरे लिए बड़ा इजी था क्योंकि मैं जॉब करता हूँ तो मेरे लिए इधर आना जो ना बड़ा बहुत आसान था। मैंने पैसा खर्च किया और मैं बस यहाँ पर आ गया। 그럼에도 진짜 하나님께서 어떻게든 이 현장을 보게 해주시려고 진짜 연차를 쓰게 하셨고 진짜 아무 문제 없이 진짜 이 선교에 오게 된 게 하나님께 영광이라고 생각합니다. I'm sure that God has allowed me to come to this field of Pakistan, and I'm sure that it's God's grace. और मैं समझता हूँ कि खुदा के कलाम की जन्म पाकिस्तान में ज़रूरत है और इस बात को होना चाहिए कि यहाँ पर काम करना चाहिए। 제가 이 현장에 오고 나서 진짜 황시영 목사님께서 메시지를 하면서 제가 뒤에서 이렇게 쭉 계속 봤거든요. So after coming to Pakistan, I listened to Pastor Wang's message at the back. और मैं पाकिस्तान में आया और मैंने पास्टर वांग के मैसेजेस जितने भी हैं वो सारे पीछे बैठ के सुने। 이렇게 뒤에서 지켜봤을 때 진짜 이 사람들 여기 있는 분들에게 진짜 복음이라는 게 진짜 중요하구나라는 것을 다시 한번 깨닫게 되는 시간이었던 것 같습니다. I was able to realize that this gospel is really important, needed for these people. और मैंने महसूस किया कि इन लोगों के लिए ये वाला जो कलाम है, ये जो खिदमत है, ये बहुत ज़रूरी है। 비록 짧은 선교 기간이었지만 진짜 여러분들 마음속에 진짜 예수는 그리스도라고 진짜 한 가지만 남기고 가게 된 것은 진짜 좋은 것 같습니다. Even though this mission was short, but then I'm really happy and thankful that I can leave Jesus Christ in your heart. और ये जो मिशन ट्रिप था ये बहुत छोटा सा है, मुख्तसर सा, लेकिन मैं यकीन करें कि अपने साथ जो है वो यीशु को लेके जा रहा हूँ और मुझे इस बात की सबसे ज़्यादा खुशी है। 오늘 한국으로 가지만은 진짜 여러분들을 두고 진짜 내년에 다시 올 거지만 내년에 일이 해고가 되어도 다시 올 거지만 여러분들을 두고 기도하겠습니다. So 녹음했냐? after I go back to Korea, so I will return to Pakistan even though I get fired from my work. मैं जब यहाँ से वापस जाऊँगा तो आप यकीन करें कि मैं दोबारा फिर आपके पास आऊँगा और ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी है। 녹음 신의 한 수여셨습니다. मेरा नाम रुखसाना है। My name is Ruxana मैं पाकिस्तान से हूँ। और I'm from Pakistan. 제 이름은 옥산하고 저는 이제 파키스탄 사람이고요. और सब लियाकत की बहन हूँ। I'm sister of Mr. Liaquat. 진짜로? Your sister? Yeah. 뭐라고? 미약한 여자 형제예요. 여자 형제. 그래? 친척. Yeah. No, sister, right? Sister. Younger sister. Yeah, younger sister. 아, 영걸 시스터? और मैं अपने भाई की यानी कि सर लियाकत की और पास्टर की बहुत शुक्रगुजार हूँ जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। And I'm really grateful to my brother Liaquat and Pastor Wang. Due to them, I able to stand here. 리아카시랑 황신영 목사님한테 감사드리고요. 이분들 때문에 제가 이 자리에 서 있는 것 같습니다. और मैं पास्टर की टीम का बहुत शुक्रगुजार हूँ और मुझे बहुत खुशी हुई जब वो आए। उनके
सबके फेस पे बहुत स्माइल थी, ना कि थकावट। When I saw very first time all the team and their faces were very that happy, and I was happy that to see their faces because normally when people came from journey, so they got tired and they feel that sadness, so but your face that was very awesome. 선교 처음 왔을 때 되게 기뻤고요. 그러니까 되게 얼굴이 좋아 보여서 원래 보통 긴 이렇게 비행을 하고 오면은 좀 피곤해 보이고 그럴만도 한데 되게 얼굴이 행복해 보여서 되게 좋았습니다. और मुझे इस बात ने भी बहुत हिम्मत दी जब मैंने इनकी पूरी टीम को सुबह सुबह उठ के इतना सफ़र करके कि यानी कि वो आए थे, लेकिन फिर भी अर्ली इन द मॉर्निंग वो यहाँ पे पहुँच गए। I was really this thing is very inspiring to me that you people came from so far from there and early in the morning you came here from Airbnb. So this is very credible for me that you never feel tiredness or like that and you came for the worship. 되게 먼 거리에서 왔고 또 아침 일찍 항상 에어비앤비에서 와서 이렇게 같이 예배드리고 하는 모습이 저한테는 되게 좀 새로웠고 좀 대단하다고 느껴졌거든요. और जब मैंने इनकी क्लास अटेंड की, मैं अभी आई हूँ तो ये सब ऐसे मुझे खड़े नजर आए कि जैसे ये हमारे इस्तकबाल के लिए खड़े हैं और हमें जगह दे रहे हैं बैठने। And I was really inspired on one thing. They are guests, but as we came in this hall, so all you people stand up on your for welcoming to me, and I could not understand that you are the guest or I'm the guest. 그러니까 우리가 손님인데도 불구하고 항상 예배드릴 때마다 먼저 서서 이제 환영해주고 하는 모습이 내가 손님인지 이 사람들이 손님인지 좀 헷갈릴 정도였다. और मुझे इनके आने से बहुत खुशी महसूस हुई है, बहुत अच्छा लगा है और पास्टर की टीम ने हमें ये दिखाया कि वो वाकई खुदा के मिशन के लिए आए। I really admire one thing that I felt this thing that this team just came from this mission of Jesus Christ. So this is a very important thing for me. 그러니까 이 선교 자체를 이제 예수 그리스도를 전하기 위해서 왔다는 것 자체가 저한테는 되게 중요하게 다가왔고요. और जब हम इनसे मिलते हैं तो हमें ये नहीं लगता कि ये कोरिया से आए हैं, बल्कि ये हमें बहुत लविंग तरीके से मिलते हैं और बड़े प्यार से इन्होंने हमारे साथ बातचीत की। And I never feel that that you are came from another country, as you live among mean to say among with us, as you are living here or from so many years or so many time. 선교팀이 다른 나라에서 온 것 같지가 않았어요. 그러니까 마치 저희랑 오랫동안 한 마을에서 산 것처럼 느껴졌어요. और जब हर हफ्ते को क्लास होती है तो मुझे बड़ी खुशी महसूस होती है और मैं यानी कि मुझे ये होता है कि मैं क्लास में लाजमी जाऊं ताकि इनकी क्लास से कुछ अच्छी बातें सीख सकूं। And especially on Saturday, I never miss the class because I was waiting on Saturday, on every Saturday, that I will listen the word of God from Pastor Hwang and Mr. Jion. 그러니까 매주 토요일마다 하는 예배도 한 번도 놓치지 않으려고 노력했거든요. 항상 이제 영모종 목님이랑 또 차무시영 부목사님 예배를 항상 드리기 위해서 참석했고요. और इनकी क्लासेस से हमने बहुत कुछ सीखा है, खासतौर पे हमारे संडे स्कूल के टीचर जो मार्टिन सर और पास्टर रहमान, इनसे हमने बहुत कुछ सीखा है कि इनसे हमने बहुत कुछ सीखा है कि वाकई यीशु ही मसीह है जो हमारी ज़िंदगी का मालिक है, हमारी तमाम मुश्किलात का हल है। From Martin and Pastor Hwang, I learned one thing: the Jesus is the Christ who solve all the problems. 그리고 응모종 목님이랑 한시영 부목사님을 통해서 한 가지 배웠는데 이게 예수가 그리스도고 이제 우리 모든 문제 해결자라는 사실을 알게 되었어요. इनकी क्लासेस से हमने ये सीखा है कि जब हम गुनाह करते हैं तो हम खुदा से दूर हो जाते हैं, तो हमें गुनाह से भी दूर रहना है और खुदा के साथ मिलके चलना है। And I learned from their messages when we got sin, so we separated from God. But when we accept Jesus Christ,
then we became the son and daughter of the Jesus Christ. So in this way we can meet to God. 메시지를 통해 한 가지 또 배운 게 우리는 죄를 짓고 하나님 떠나게 됐는데 근데 이제 예수 그리스도를 통해서 다시 이제 하나님을 만나게 되었다는 것을 알게 되었거든요. और ये अपनी क्लास में जो हमें एतराफ़ करवाते हैं, जो मेरी दुआ सिखाते हैं, वो मैं कोशिश करती हूँ कि उसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाऊँ और रेगुलर उसे पढ़ूँ. And during the lecture time, when they confess and they said repeat after me, so this prayer I always use on my daily prayer, and this prayer give me the strength and power. 그리고 예배 시간에 했던 영접 기도를 항상 기도할 때마다 제 스스로 항상 다시 하곤 하는데 그럴 때마다 항상 힘이 되고 좀 새로운 힘을 얻게 되는 것 같습니다. क्योंकि जब ये मैं दुआ पढ़ती हूँ, मैं किसी भी मुश्किल में हूँ या कोई परेशानी हो या किसी की भी परेशानी हो, मैं उसको मुश्किल में देखूँ तो मैं उसके लिए ये प्रेयर करती हूँ तो वो मुश्किल हल हो जाती है. When I saw the people's difficulties and I pray, which pastor that told me, so believe me, the person who is sick or who is in difficulties, his problem or difficulties remove due to this prayer. 그러니까 아프거나 이제 문제가 있는 사람들을 봤을 때 우리가 이제 기도를 통해서 그게 없어지는 것을 알았어요. मैं इस टीम का पूरे तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि ये हमारे लिए यहाँ इतनी दूर से आए और इनके लिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये मेरे लिए भी दुआ मांगे ताकि मैं भी इनकी तरह मिशनरी बन सकूँ. And I really thankful to all the people who came from Korea, and also pray for me that I want to be a missionary and I want to be evangelize all over the world one day. 선교팀한테 되게 감사드리고 또 저를 위해서 기도해 주셨으면 좋겠는 게 저도 언젠가는 선교사가 되는 게 꿈이고 또 이제 세계 곳곳에 나가서 이제 전도 선교를 꿈꾸고 있거든요. Thank you. Thank you. 감사합니다. 지혜 나오. 김서연, 피자 먹으러 갔어. 머리 벗고 해. 갈 건데. 안녕하세요. 저는 한국에서 온 홍지혜, 한국 이름은 홍지혜라고 하고 어제 폴린이 아이린이라는 이름을 지어줬습니다. My name is 지혜형 and also Pauline gave me an English name Eileen. मेरा नाम जी है लेकिन पॉलिन ने एक मुझे इंग्लिश नाम आइलीन दे दिया है. 저희가 먼 나라에서 왔다고 해서 처음부터 이 예수가 그리스도인 믿어지고 처음부터 제자라고 생각하실 수도 있을 것 같습니다. So you might think that we are the disciples because we've come from long distance far country. और मैं समझती हूँ कि हम वाकई ही खुदा के शागिर्द हैं जो इतनी दूर दराज से जो है वो सफ़र करके उसके मिशन के लिए आए हैं. 사실 뭐 그렇게 된 지 얼마 되지도 않았고 사실 제자가 지금도 아닐 수도 있습니다. It's been not a long time and we might not be a disciple yet. और मैं बहुत ज़्यादा अरसे से तो शागिर्द नहीं हूँ. 근데 저한테 한번 그리스도가 인격적으로 다가왔던 순간이 있습니다. But then there's this one time that Christ came to my life with personal. और लेकिन एक दफ़ा क्या हुआ कि मेरी ज़िंदगी में यीशु जो है वो शख्सी तौर पे मेरी ज़िंदगी में आया. 가정의 상처로 견딜 수가 없었을 때 하나님께서 저한테 하신 말씀이 있습니다. That God healed me when I had such a huge pain because of my family. और खुदा उस वक्त मेरी ज़िंदगी में आया जब मेरे ख़ानदान में बड़ी मुसीबत चल रही थी. 하나님은 조건 없는 사랑으로 나를 사랑하시고 포기하지 않는 사랑으로 나를 사랑하신다. So God loves me unconditionally and He's not gonna forget me. और खुदा मुझे प्यार करता है और वो किसी कंडीशन के साथ प्यार नहीं करता बल्कि वो बेलौस प्यार करता है हमें. 나는 오늘 피었다 지는 꽃과 같고 하루살이와 같은데 이런 나를 구원하셨다. Just live like a flight that live one day, but then save. और मैं ज़िंदगी में बड़ी मुश्किलात में थी लेकिन
उसकी रहनुमाई में चल के मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और उसके साथ चलना चाहती हूँ। 그렇게 하나님을 예수가 진짜 그리스도, 예수만이 그리스도이심을 처음 느꼈던 것 같습니다. And that's when I realized that only Jesus is Christ. और ये कब हुआ जब मैंने इस बात को महसूस किया कि सिर्फ यीशु ही मसीह है। 근데 그렇게 예수님을 믿으면은 계속 그냥 탄탄하고 평안하고 해야 되잖아요. But then after you believe in Jesus Christ, you're going to have the peaceful life. और जब आप खुदावंद यीशु के साथ होते हैं तो आपकी ज़िंदगी में अमन और सुकून होता है, ऐसा ही है? 며칠 전까지만 해도 너무 힘들었고 몇 개월 전까지만 해도 감당할 수 없었던 일들이 막 벌어졌습니다. Even a few days ago, even a few months ago, I went through a lot of hardships that I can't handle. और कुछ दिन पहले या कुछ हफ्ते पहले हमारे घर में जो ना बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी, लेकिन आप यकीन करें कि मैंने बड़े अच्छे तरीके से उन चीज़ों को जो ना वो हैंडल किया। 근데 지난 시절을 생각하면서 이 모든 일이 하나님의 시간표 속에 있고 절대 주권 속에 있음을 인정하게 되니까 그 일들이 너무 크게 힘들긴 했지만 너무 아프진 않았던 것 같습니다. But then looking back, I realized that this is all God's plan, and it's His sovereignty. So it was painful, but then I was able to handle it. और मैं समझती हूँ कि ये उसकी जो महदूद मोहब्बत है, जो उसकी लाजवाल मोहब्बत है, ये उसका नतीजा है कि मैं हर चीज़ को जो है वो बड़े अच्छे तरीके से जो है वो संभाल लेती हूँ। 그래서 여러분들도 살면서 많은 어려운 일들이 있겠지만 이 모든 일이 말씀 안에 있으면 하나님의 시간표 속에 있음을 잊지 않고 말씀 안에서 견디셨으면 좋겠습니다. So I'm sure that you guys are going to have a lot of limitations, difficulties. If you're in God's word, then I'm sure that you can handle these problems. और मैं समझती हूँ कि पूरी दुनिया में मसले मसाइल जो है वो चलते रहते हैं और बहुत मुश्किलात भी हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब आप उसको थाम लेते हैं तो मुश्किलात खुद ब खुद दूर होना शुरू हो जाती हैं। 저 여기 올 때 마태복음 28장 말씀을 붙잡으면서 예수님께서 처음과 마지막까지 하신 말씀이 모든 민족에게 가서 제자 삼으라고 하신 말씀을 붙잡고 왔습니다. So before I come here, I went through this Matthew chapter 28 that Jesus said that go to all nations and make all the people your disciples. और आने से पहले जब मैंने मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील उसका 28वें बाब को पढ़ा तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि जाओ और सारी दुनिया में इंजील की मनादी करो। 아무 죄도 없는 예수님이 이 땅에 오셔서 죽었던 나를 살리셨는데 당연히 해야 된다는 거라고 생각을 했습니다. Jesus came to this world, but he didn't do anything wrong, but he died for us. खुदा यीशु मसीह इस दुनिया में आए और उन्होंने हमारे लिए अपनी जान दे दी। 하나님의 도구는 사람이라고 합니다. And God's tool is us, the humans. और खुदा ने इंसान को जो है ये चीज़ बताई 그리고 믿음대로 된다고 하십니다. And also God is telling us that we're going to be like according to our faith. और वो हमें बताता है कि आप अगर उसके साथ चलते हैं तो कितनी बरकतें मिलती हैं। 그래서 여러분들도 본인 각자가 하나님의 도구임을 잊지 않고 오늘 그 자리에서 그리고 나도 세계복음할 하나님 자녀임을 잊지 않았으면 좋겠습니다. Don't forget that God's going to use you one day. Don't forget that God's going to use you as a world, the main figure of this world evangelization. और आपने ये इस बात को कभी नहीं भूलना कि एक दिन खुदा आपको ज़रूर इस्तेमाल करेगा और आपने इसको जारी रखना है और ये भी हो सकता है कि वो अभी से आपको इस्तेमाल करना शुरू कर दे। 하고 싶은 말이 있었는데 까먹었네. 저도 이번에 황시영 목사님 말씀을 들으면서 나도 오늘도 그리스도가 필요하다라는 걸 계속 붙잡았습니다. So listening to the message, keep holding on to this the message that I need that Jesus Christ is good. और मैं लगातार जो मैसेजेस वगैरह सुनती हूँ, ठीक है ना, उसमें ये होता है कि मैं खुदा के और ज़्यादा जो है ना वो करीब आना शुरू हो जाती हूँ। 이 고백을 날마다 하는 게 내가 할 수 있는 오늘의 전도 선교 세계복음화라고 생각합니다. I think that having this confession every day is my evangelization, my mission, and my world evangelization. और मैं समझती हूँ कि रोज़ाना जब मैं इस चीज़ को दोहराती हूँ तो मेरे ज़हन में ये मिशन जो है ना वो रहता है कि मुझे पूरी दुनिया में जाके गीत की मनादी करनी है। 네, 사실 저는 정을 빼면은 시체예요. I give a lot of this feeling to other people, this emotion.
और मैं समझती हूँ कि मेरे पास दुनिया को देने के लिए बहुत फीलिंग्स हैं. 그래서 아까 전에 아이들이랑 헤어질 때도 눈물을 흘렸는데 I had a lot of tears when I said goodbye to the kids. और जब मैं मेरी आंखों में बहुत ज़्यादा जो है वो आंसू थे जब मैं बच्चों को जो ना छोटे बच्चों को जो ना सिखा रही थी. 여러분들을 만나게 돼서 너무 감사했습니다. और मैं खुदा उनका बड़ा शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मुझे आप जैसे लोगों से मिलवाया. 저는 오늘 행복해야 되는 행복주의자 인간입니다. So I'm an optimist that I have to be happy every time. और मेरे लिए बड़ी बरकत की बात है कि मैं हर वक्त जो है ना अब खुश रहती हूँ. 여러분들과 예배하고 찬양하고 하는 모든 시간들이 너무너무 행복해서 절대 잊지 못할 것 같습니다. I won't forget this moment because I was so happy worshiping with you, praising with you. और मैं आप लोगों के साथ दुआ करके आप लोगों के साथ इबादत करके मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है. 소중한 기회를 주신 하나님께 감사드리고 여러분들을 두고 한국에 가서까지 정말 늘 기도하도록 하겠습니다. And I thank to God for giving me this opportunity and I also pray for you guys after I return back to Korea. और मैं जब कोरिया वापस जाती हूँ तो मैं आप लोगों के लिए दुआ करूँगी, हमेशा आपको दुआ में याद रखूँगी. 감사합니다. 어른들 가방 챙기세요. 어른들 여기 제 방에 가방 챙기세요. 바로 6시에 출발해야 되니까. Rebecca. 잠깐만 기다려주세요. 가방 챙겨서 들어주세요. 프로는 이제 바로 가야 되니까 바로 출발할 거니까. नहीं अभी नहीं जाना. इन्होंने अभी नहीं जाना. नहीं लेकिन वो अभी इन्होंने आना है वापस से. 혹시 호텔 가는 팁도 바로 챙겨서 바로 호텔 가는 팁? 아니야. 여기 다시 올 거야. 호텔 가는 사람. 근데 아까 호텔 가는 사람 다시 여기 와야 된다 그랬지. You want to go? These girls want to go? Yes, Airport. yes. Airport. 그렇게 할 거면은 나도 짐 챙겨야 If 돼. you want to stay, so you can. We will come. 아니 지금 물어보는 거는 저희도 공항 같이 따라가냐고 그거 물어보는 거예요. Then we will 따라갈 go. 거야. Yes, yes, we will go to the airport. Airport you want to go? Yeah, yeah. Okay. So luggage 거기서 will 바로 be 호텔 here. 가긴 힘들지. After that, then we will drop to cab for Pauline and Karen. So then we will go to. Okay, so right now we will go to airport and then Yeah. come back here and then go to hotel. Yeah. 목사님 여기 들리네요. 시작해. जी बेटा सुनना है जरा. हेलो. मेरा नाम रुबेका है. My name is Rebecca. 레베카. Yeah. 제 이름은 레베카입니다. और मैं बचपन से ही सुनती आ रही हूँ कि खुदा मसीह है और यसु मसीह है और जिंदा खुदा का बेटा है. From the beginning, I was listening this sentence, Jesus is the Christ and who is the living God. 저는 시작할 때 이 메시지를 들었습니다. 예수는 그리스도시요, 살아계신 하나님의 아들이십니다. और सुबह जब मैंने पास्टर हुआन की क्लास अटेंड की तब मुझे पता चला कि इस बात का रोजाना इतराफ़ करने से हम खुदा के साथ जुड़े रहते हैं और बहुत से गुनाहों से दूर रहते हैं. And in the morning when Pastor Hwang shared the message and he told about the importance of this sentence, so I realized that this is a very important sentence in my life. Earlier I don't know. 목사님께서 아침에 메시지를 선포하시면서 마태복음 16장의 메시지가 정말 중요하다고 말씀하셨습니다. 그리고 저에게도 이유 없이 이게 중요하다고 느껴졌습니다. और अब मैंने यही सीखा कि हर रोज़ अगर मैं इस बात का इतराफ़ करूंगी तो बहुत सी मुश्किलों और परेशानियों जो मेरी ज़िंदगी में परेशानियां और नाउमीदी है इस बात का इतराफ़ करने से वो सारी मुश्किलात मेरी हल हो जाएंगी. And my mind and heart from the morning till now
saying this thing, if I will confess this sentence correctly, so then definitely one day God will bless me and He will give me the desired things which I want. 저는 그 아침에 그 메시지를 들었을 때부터 지금까지 한 가지 확실했던 것이 내가 계속 이 마태복음 16장 16절을 고백하면 하나님이 나에게 축복하실 거라는 거가 느껴졌습니다. और पास्टर हमाम और सर लियाकत की और शुक्रगुजार हूँ कि उनकी वजह से मुझे अपनी ज़िंदगी में यीशु मसीह के बारे में मज़ीद जानने के लिए मिला और मज़ीद और बातें नहीं जो मैं यीशु मसीह के बारे में नहीं जानती वो जान सकूँगी. I'm really thankful to Liaquat and Pastor Hwang. Due to them, I learned so many things about Jesus Christ. 정말 황시영 목사님과 리아카스에게 감사드리는 건 이들을 통해서 제가 그리스도에 대해서 더 많이 알게 되었습니다. और पास्टर हमाम की टीम का शुक्रगुजार हूँ कि वो इतनी दूर से हमारे लिए आई और जो आज का दिन हमने उनके साथ पूरा दिन स्पेंड किया मुझे बहुत अच्छा लगा स्पेशली जो हम लोगों ने लंच किया. थैंक यू सर लियाकत एंड पास्टर हमाम का बहुत मज़ा आया. And I really thankful to Pastor Hwang that about today's lunch. Because I never, that very first time I went there and have spent the time with you people, and this was the very joyful moment for me in my life. 특히나 오늘 황시영 목사님께서 점심을 사주셔서 너무 감사했는데 처음으로 이렇게 사람들과 함께 이야기하면서 시간을 나누니까 너무너무 좋았습니다. बस मैं आप सबको थैंक यू कहती हूँ और आप सब मुझे और मेरे हस्बैंड को अपनी दुआओं में याद रखिएगा. I want to say thank to all, and I have a humble request that 5 years ago I got married, but I don't have baby. So you all people pray for me that Lord Jesus bless me and my husband with a baby. 여러분에게 겸손하게 하나의 요청을 드립니다. 저는 5년 전에 결혼을 했는데 아직까지 아이가 생기지 않습니다. 그래서 여러분이 저를 위해서 그 부분에 대해서 기도해 주셨으면 감사하겠습니다. 감사합니다. So Pastor, can you give this girl time because tomorrow in the morning she cannot come. आप सुबह मुझे पता नहीं आ सकते वो आपके घर में प्रोग्राम है तो मुश्किल होगा. मेरा नाम एथल है. My name is Ethel. 제 이름은 에틀입니다. मेरा पाकिस्तान से ताल्लुक है. I belong to Pakistan. 파키스탄 사람입니다. और मैं शुरू से ही चर्च जाती थी पर मैंने यीशु को 15 साल की उम्र से जाना. From the beginning, I heard about Jesus Christ. 처음에 저는 그리스도에 대해서 이야기를 들었습니다. But when I was the age of 15, I experienced Jesus Christ. 제가 15살 때 그리스도를 체험했습니다. Say. Okay. Wait. Oh, so sweet. Yes, age of 15. Okay. चलिए. I'm too sweet. 저는 굉장히 친절합니다. चर्च जाती थी पर मुझे इतना नहीं पता था जितना मैंने अब जाना है. Actually, you know that why she was crying, because she was saying as at the age of 15 I accept Jesus Christ, but in these days or through the Pastor Wang's classes I realized that what is Jesus in correct way. 제가 15살 때 그리스도를 알고 그리스도를 마음에 영접했지만 이제야 와서 예수 그리스도가 누구신지 정확하게 알았습니다. और
जब मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती थी कि मैं खुदा के साथ चलूं, पर ऐसा हो नहीं पाता था। कभी ना कभी कोई ना कोई मुश्किल या परेशानियाँ हो जाती थी, जिसकी वजह से मैं खुदा से दूर हो जाती थी। Actually, I was trying to get Jesus Christ his my own way, but I was wrong. As I listened the lectures of Pastor Huang, that time I realized that yes, this is the thing which I have lacking, because without Jesus Christ we cannot meet God. 저는 제 힘으로, 제 노력으로 하나님을 만나려고 노력했었습니다. 하지만 그것이 틀렸다라는 걸 깨달았습니다. 그리고 황시영 목사님 메시지를 통해서 내가 무엇이 부족한지, 그리고 내 힘으로는 하나님 만날 수 없다라는 걸 알게 되었습니다. और अब जो कोई भी परेशानी या मुश्किल, कोई भी ऐसा टाइम आता है कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही होती, मैं सिर्फ यही जुमला याद रखती हूँ कि यीशु मसीह है और तमाम मुश्किलात का हल है, और मैं दुआ करने बैठ जाती हूँ। Now the condition of my heart and mind, when I feel difficulties in my life, so I remember one sentence: Jesus is the Christ who solve all the problem. 지금 제가 제 지금 마음의 상태는 어떠냐면, 제가 어떤 문제를 맞닥뜨렸을 때 제 마음에는 한 가지의 문장이 남습니다. 주는 그리스도시요 모든 문제 해결자이십니다. आमीन। और मुझे ये महसूस होता है कि मेरे अंदर बहुत से चेंजेस आ गए हैं। मैं दूसरों से प्यार से, मोहब्बत से पेश आती हूँ, और शायद मैं पहले ऐसा नहीं करती थी। कभी ना कभी कोई गलती हो जाती थी मुझसे, पर अब ऐसा है कि मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत सी तब्दीलियाँ महसूस करती हूँ जो मुझ में पहले नहीं थी। And now I'm feeling in these days I'm feeling that one big change. Earlier I was very rude, but right now after listening to so many messages about Jesus Christ through Pastor Huang, so now I became very that calm and cool, and I always thankful to God that He give me the correct gospel. 이전에는 어떤 규칙에 의해서 굉장히 제가 억압받고 이랬었는데, 지금은 목사님의 메시지를 듣고 굉장히 편안해졌고 더 이렇게 쿨해졌습니다. Excuse me, वो पुलिस वालों की कितनी कॉल्स आई हैं कि आज है हमारा टाइम? What is the time? बताएं। 6 वो कॉल करी जाने बार-बार। Actually, last. 가야 돼? ये जब पास्टर और सारी टीम यहाँ पर आई है, ये मेरे लिए बहुत ब्लेसिंग थी। And this moment is very blessed for me that you all people came in Pakistan and shared the word of God, and especially about Jesus. I learned so many things. 이번이 이렇게 팀에 방문하신 게 저에게는 굉장히 큰 축복이었는데, 제가 정말 예수가 그리스도 되심에 대해서 다시 한번 배우는 시간이었습니다. और मैं सारी टीम की शुक्रगुजार हूँ कि वो इतनी दूर से आए और हमें खुदा का कलाम सुनाया, ताकि हम खुदा में और ज़्यादा मजबूत हो सकें। I'm really thankful to all of you people that you came from so far, and due to their effort, your mission, that is grateful for me and blessed for me, that through your mission I have so many desires comes in my mind, that if they people do that, so why I'm not? So I promised with God that I will do also the word of evangelization. 이번 이 선교가 저에게 되게 뜻깊었는데, 이 선교하시는 분들을 보면서 이분들이 우리나라에서 선교하시는데 왜 나는 할 수 없는가? 그래서 내 마음에도 나도 언젠가 선교해야겠다라는 마음이 들어왔습니다. और इसी दौरान जब मैंने खुदा को जाना, खुदा ने मेरे ज़िम्मे एक जिम्मेदारी लगाई कि मैं जो छोटे बच्चे हैं संडे स्कूल के, उनको सिखा सकूं और यीशु को और ज़्यादा जान सकूं।
through your mission, I learned one thing, and God put in my mind or heart this thing that in my area some children. So I will start the that Sunday school that they can learn about Jesus Christ correctly. 그래서 제가 이번 미션을 보면서 깨달은 건 제가 있는 지역에 많은 아이들이 있는데 이 아이들에게 내가 썬데이 그 주일 학교를 시작했으면 좋겠다라는 마음이 생겼습니다. Thank you. 감사합니다. 안 하면 난리 날 뻔했네. 더 익혀줘요. Tomorrow actually the first meeting that 이제 가야 됩니다. We should go right now to the airport. yeah. अभी इधर मुझे अच्छा लगता है कि हम इस बात को जारी रखते हैं, लेकिन बाकी जो लोग रह गए हैं वो सुबह जो है ना वो करेंगे। और मैं अभी क्योंकि हमें एयरपोर्ट पे जाना है कुछ लोगों को जो है ना छोड़ने के लिए, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है। 여러분들이 가진 이 받은 은혜를 꼭 간직하셔서 내년에 뵙겠습니다. I hope you keep this grace in your heart and then let's see you guys next week. मैं उम्मीद करता हूँ मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो फजल है जो आप लोगों ने शेयर किया है, ठीक है, ये हमेशा आप पे कायम रहे। और जब मैं अगले साल दोबारा आपके पास आता हूँ तो ये फजल जो ना इसी तरह जारी रहेगा, बल्कि इससे भी ज़्यादा बढ़ेगा। 내일 아침에 9시까지 꼭 오셔서 마지막으로 저희 7명과 나머지 분들도 같이 포럼하며 깊은 시간을 가졌으면 좋겠습니다. So please come tomorrow by 9 p.m. So those who are left will come here and then share the forum, and also those who are not sharing the forum today among the Pakistan people, please share the forum. और मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि कल सुबह जो है 9 बजे आप आएँ, ताकि हम सारे ये नहीं सोचना कि यार मुझे सामने आके बोलना पड़ेगा, क्योंकि हम खुदा के लिए ये कर रहे हैं। तो इसलिए आपको आना चाहिए सुबह और टाइम पे आइएगा। जो बाकी लोग रह गए हैं वो भी इस फॉरम को यूज़ करेंगे और इसी तरह हम एक दूसरे से सीखते हैं। 하나님께 영광의 박수 올려드리겠습니다. 내려가세요.